ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, मत्ती सुसमाचार 3रा अध्याय. कुछ वचनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. मत्ती सुसमाचार 3रा अध्याय. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला. उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा. दूसरा वचन 2. यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई. जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो. 4. तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए. 6. जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो. 8. और अपने अपने मन में या न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है. 10. मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है. मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं. वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा. 12. उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया. 14. यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से अब सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है. तब उसने उसकी बातें मान ली. 16. वचन सब मिलकर पढ़ेंगे. 17वें वचन से उठकोना. और देखो ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं. प्रार्थना करेंगे. జింగుల తండ్రి, అత్యున్నత సింహాసనం ప్రభా, వారిని మాట్లాడుతున్న మా గొప్ప తండ్రి, ఇవి సజ్జుల ప్రభా, యేసుక్రీస్తు ప్రభా మీ పాదములు పొందుస్తూ చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఏ విధంగా పాపమని తండ్రి ఎంతో దూరముగా మీ ఇంటికి రాలేని పరిస్థితిలో పాప జీవితంలో పడి ఇదిగో తండ్రి మిమ్మల్ని ఆరాధన చేయలేని ఒక భయంకరమైన స్థితిలో జీవించే సమయంలో తండ్రి మీరు నన్ను కనికరించినారు, దయ చూపించినారు. రక్తస్రావపు స్త్రీని ఏ విధంగా మీరు స్వస్థపరిచినారు, ఆ విధంగా నా యొక్క అవమానాన్ని, నా యొక్క సిగ్గుని, నా యొక్క చింతని, నా యొక్క భయాన్ని సమస్తముని మీరు పారదోలి గొప్ప సమాధానం, శాంతితో, నెమ్మదితో నన్ను నింపి తండ్రి గొప్ప రక్షణ నాకు అనుగ్రహించి మీ ఇంటిలో మీ సన్నిధిలో మీరు ఆరాధించే ఒక స్థితికి నన్ను తీసుకుని వచ్చిన విధానం బట్టి తండ్రి స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తున్నాను తండ్రి. అయ్యి నా జీవితాన్ని మార్చి మీ పాద సన్నిధికి వచ్చి పరిశుద్ధులతో మీ సంఘంతో పాటు నేను కూడా మేము స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ మీరు ఇచ్చిన తండ్రి సమాధానాన్ని, మీరు ఇచ్చిన నెమ్మదిని పొందుకున్న వాడినై ఈ విధంగా తండ్రి మిమ్మల్ని కొనియాటకు, మిమ్మల్ని కీర్తించుటకు, గణపరచుటకు నాకు ఇచ్చిన తండ్రి ధన్యకరమైన రక్షణ జీవితాన్ని బట్టి స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ తండ్రి మరొకసారి మీ పాద సన్నిధిలో చేరి మీ బల చుట్టూ తండ్రి చేరుచుంటుండగా మీ పరిశుద్ధమైన జీవుల మాట మీరు విడుదలపరచండి. మీ ఆత్మ ద్వారా మీరే మాట్లాడుతురండి. మా అందరూ మీరు సంధించండి. వినగల చెవులు, గ్రహించే హృదయం, చూసే కనులు మాకు అనుగ్రహిస్తురండి. వాక్యము ఉన్నట్టుగా అర్థం చేసుకున్నట్టుకు మీ ఆత్మ వివేచన జ్ఞానము, మీకు ఆత్మ సహాయము, నడిపింపు మీరు అనుగ్రహిస్తున్నామని తండ్రి ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ విధంగా తన అయోగ్యని తన శిలుచాటును మరుగుపరచండి. మీ మెల్లైన స్వరం మా అందరికి మీరు విడుదలపరుస్తున్నామని మీ పరలోక సింహాసించి మీరు తను ఏదైతే మాట్లాడని మీరు కోరుకుంటున్నారో ఆ మాటలు మీరు విడుదలపరిచి మాకు తృప్తిపరిచి యోగ్యుని దానిలో పరీక్షించుకుని వల్ల పాల్పొందుటకు మాకు సాయం చేస్తున్నామని వందనము స్తోత్రం చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి అత్యున్నత నామములో స్తుతించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొని పొందుతున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.
ನಾವು ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮತ್ತೇನು ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. इस प्रकार हम देखते हैं कि मत्ती सुसमाचार 3रे अध्याय में 2 व्यक्तियों के बारे में हम प्रमुख रीति से हम पढ़ सकते हैं. देखिए पहले वचन में हम देखते हैं उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला. ಮೊದಲನೇ ವಚನ ನೋಡ್ತೇವೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಕೊಡುವಂತ ಯೋಹಾನ, ಸ್ನಾನಿಕನಾದಂತ ಯೋಹಾನ ಎಂಬಂತ ಮಾತು ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ये व्यक्ति ये इंसान कौन है, पहले हमें इसको समझना है. देखिए यूहन्ना जो है वो इस प्रकार वो अरण्य में वो जीवन बिताने वाला, सभी लोगों के बीच में, समाज में हर एक व्यक्ति के समान, हर एक व्यक्ति के रीति में वो इस प्रकार जीने वाला व्यक्ति नहीं था. ಯೋಹನ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆತನು ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋದ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಆತನ ಜೀವನ ವ್ಯತೀತ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈ ಯೋಹಾನನು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಯೋಹಾನನು ಆತನು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದುವಾಗಲೇ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಭರಿತನಾಗಿದ್ದನೆಂಬಂತ ಮಾತು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. हम इस यूहन्ना के बारे में देखते हैं, जब वो अपने माता के कोख में था वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति ಯೂಹನ್ನ था. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆತನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳುತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. हम देखते हैं इतना शक्तिवान, इतना बलवान अधिकार से वो बातें किस प्रकार वो बोलता है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे अंदर काम करता है, तो वो व्यक्ति किसी से भी वो नहीं डरता. ನೋಡಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧಕವಾಗುವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾರನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ఎదురువాతనల్ల ప్రియుడు. మనం మనుషులకి భయపడితే మనం ఎవరికి కూడా మనం దేవునికి భయపడలేం. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే మనం దేవునికి భయపడతామో అందరూ మనల్ని చూసి భయపడేవారుగా ఉంటారు. ఇది ఒక క్రైస్తవునికి దేవుడిచ్చిన గొప్ప జీవితం. जब हम लोगों से डरते हैं तो परमेश्वर का डर हमारे अंदर से निकल जाता है. जब हम परमेश्वर से डरते हैं तो हर एक लोग हमको देखकर वो डरने लगते हैं. एक ऐसा डर है, इनके अंदर जीवित परमेश्वर रहता है, इनके अंदर परमेश्वर की शक्ति है, उनकी आत्मा की शक्ति इनमें काम करती है. ಇವರಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ, ಕರ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವಂತ ಭಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈ ಭಯವು ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸರ್ವಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ये जो भय है हमारे बारे में, जो भय जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है, परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, उसको देखकर सभी लोग ये जानने लगते हैं कि ये परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की संतान है. ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲೋಕವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो था वो मलाकी जो है पुराने नियम में हम देखते हैं आखिरी पुस्तक ಮಲಾಕಿ ಗ್ರಂಥವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಳಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಪುಸ್ತಕವಾದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ 300 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರವಕ್ತನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಸಹ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ಭವಿಸಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. 300 साल से ज्यादा समय तक मलाकी जो है मत्ती सुसमाचार से पिछला पुस्तक जो है पुराने में आखिरी पुस्तक, वहां से हम देखते हैं कि मत्ती सुसमाचार के बीच में 300 साल से भी ज्यादा समय तक कोई भी भविष्यद्वक्ता उनके बीच में, इजराइल लोगों के बीच में उधर उत्पन्न नहीं हुआ. 300 साल के बाद एक आदमी उधर उत्पन्न हो रहा है. वो आदमी का नाम क्या है? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना. हम देखते हैं कि इतने सालों के बाद एक आदमी आ रहा है, तो उसमें कितनी शक्ति है, कितनी आत्मा का वो प्रेरणा से वो बात कर सकता है. ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲವಂತ ಅವಧಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದ್ಭವಿಸ್ತಾ ಇರಂತಂದ್ರೆ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಇರ್ಬೋದು, ಆತನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧಕವಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕತ್ತಲೆ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಮಹಾ ಬೆಳಕು ಉಂಟಾಯಿತು, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ, ಕರ್ತನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತನು. ये व्यक्ति क्या बोलता है? परमेश्वर का उजियाली है, परमेश्वर का दिन आ चुका है, परमेश्वर के मार्ग को तुम सिद्ध करो बोलने वाला एक मान व्यक्ति जो है वो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था. इस बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के समान हमारा जीवन होना है, परमेश्वर हमसे चाहता है. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಸಹ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಯೋಹಾನು ಸ್ನಾನಿಕ ಅಂತ ಯೋಹಾನನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆತನು ಗರ್ಭದಿಂದಲೇ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಭರಿತಾನೆಂಬುದಾಗಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದೇನು,
ಆದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಫೆಸಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆತನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. भले ही हम जो कुछ इधर बैठे हैं हमारे अंदर हम माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरकर हम नहीं निकले हो, पर पवित्र वचन बोलता है इफिसियों को पहले अध्याय में जो कोई उद्धार पाया है उनको परमेश्वर अपने आत्मा उड़ेल कर उनको भर देता है. इससे हम जान सकते हैं कि हम सब लोग में पवित्र आत्मा की शक्ति काम करती है. हम साधारण लोग नहीं है, हम जैसे सोचते हैं हम वैसे लोग नहीं है. ये संसार बोलेगा, सब लोग बोलेंगे तुम्हें पढ़ाई भी नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें गरीब आदमी हो, तुम सब लोगों के बीच में नहीं रह सकते. इस प्रकार ये संसार में बोल सकता है, पर परमेश्वर हमारे बारे में क्या बोलता है? तुम एक शक्तिमान आदमी हो, तुम्हारे अंदर मेरी आत्मा की शक्ति बसती है, तुम मेरे काम करने के लायक हो. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವು ಬಡವರು, ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು, ಓದಿಲ್ಲದವರು, ಓದಿರೋದರು, ಜ್ಞಾನವಂತರು, ಬುದ್ಧಿಹೀನರು, ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಗಾಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಹಿಸ್ ವಿಲ್. ನಾವು ಆತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಗತವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ಮರ್ತೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. हमारा जीवन कुछ भी कितना भी बिगड़ा हुआ हो, कितने ज्यादा पाप हम किए हो, जब हम परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देते हैं तब परमेश्वर क्या बोलता है? तुम मेरे काम के अब लायक बन चुके हो. संसार बोलेगा तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है, तुम लायक नहीं हो, पर परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा. यू आर रेडी फॉर माई टू डू माई मिनिस्ट्री. ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನೀ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. सो हमें क्या करना है? बपतिस्मा का यूहन्ना इस प्रकार अपने आप को सौंप कर किस प्रकार पवित्र आत्मा से भरते हुए परमेश्वर के वचन बोलते आया, परमेश्वर का राज्य आ चुका है, तुम अपने मन को फिराओ, परमेश्वर की तरफ तुम आ जाओ. इस प्रकार हमें भी बोलने वाले लोग हमें बन जाना है. देखिए, हम इतने दिन तक बहुत सारे अपने आप के लिए हम कर चुके हैं, पैसा कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बहुत सारे काम कर चुके. इससे हमें कुछ भी फायदा नहीं है. जब तक हम परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में उसको पूरा नहीं कर देते, तब तक हम कितना भी कमा दे, कितना भी खा ले, पी ले, कितना भी मजा कर ले, हमारे जीवन में जो है वो संतृप्ति का जीवन हमें कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य वो नहीं है. ಎಷ್ಟು ತಿಂದರೂ ಕುಡಿದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯರ್ಥಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. We are not created for that purpose, to waste our life, to ruin our life in this worldly things. Our life is precious in the sight of God. He wants to use us as a pearl, as valuable as a pearl. एक मोती के समान परमेश्वर हम सबको देखता है. मोती हर जगह में नहीं मिलती, समुद्र में हमें बहुत ही नीचे जाना पड़ता है मोती के लिए. हम सबको परमेश्वर एक मोती समझता है. ಬೆಳೆ ಉಳ್ಳಂತ ಮುತ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತಮ್ಮನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಗಾಡ್ ಸೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಸ್, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. परमेश्वर हमारे में क्या बोलता है वो ही परमेश्वर सबको हमें दिखाना है. हमारा जीवन जो है बहुत ही मूल्यवान जीवन, हमें इस प्रकार परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए उनके द्वारा हमें उपयोग किए जाने वाला एक पवित्र पात्र बन जाना है. एन इंस्ट्रूमेंट एंड होली वेसल टू बी यूज्ड इन द हैंड्स ऑफ द मास्टर. बपतिस्मा का यूहन्ना इस प्रकार बन चुका था. उसके बारे में कि वो बहुत ही शक्तिवान आदमी था. कैसे बना शक्तिवान आदमी? वो एक भौतिक रीति से देखते हुए एक निर्बल है, उसके पास पैसा नहीं है, वो समाज में नहीं था, वो अकेला जी रहा है अरण्य में. कैसे बन गया शक्तिमान व्यक्ति? क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा शक्ति बस चुका है. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯರೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೋಕಸ್ಥರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕೀಳುಮಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಗಮ್ಯವಿಲ್ಲ, ಗುರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ, ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಯಾಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಕರ್ತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. परमेश्वर ने हमें हमारे लिए अपना लहू बहाया है,
हमें अपने लहू से उसने इस प्रकार खरीदा है, हमें वो चुना है। इसलिए चुना है ताकि हम उसकी महिमा को प्रकट कर सके, उसकी शक्ति को प्रकट कर सके, और यीशु मसीह का जो उज्ज्वला ज्योति हमने पाई है सारे जगत को हम दिखा सके। बपतिस्मा का यूहन्ना वो दिखा रहा है, हम भी दिखा सकते हैं। कब दिखा सकते हैं? जब यूहन्ना के समान यीशु मसीह के बारे में हम प्रकट करते हैं, प्रचार कर सकते हैं, करने लगते हैं। उसको उसका काम करने के लिए अपने आप को हमें तैयार करना है। वी शुड प्रिपेयर अवरसेल्व्स टू डू द वर्क ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಬಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯು, ತನ್ನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು, ತನ್ನ ಒಂದು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಆತನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನನ್ನಷ್ಟಿಗೂ ನಾನೇ ಕರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಕರ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಹೀನರಾಗ್ತೇವೆ. जब परमेश्वर अपनी सेवा करने का जो जिम्मेदारी हमें वो देता है, उसके साथ उसका अधिकार देता है, उसकी आत्मा की शक्ति देता है, और उसके साथ क्या देता है? अपनी महिमा से भरपूर जो है वो हमें भर देता है, तभी हम उसकी सेवा कर सकते हैं. अब आप पूछ सकते हैं, मैं क्यों उसकी सेवा करूं? ನಾನು ಆತನ ಸೇವೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನನಗಿದೆ, ನನಗೆ ಆದಂಥ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನನಗಿದೆ, ನನಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನನಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗುಣವಂತರು, ಗಣವಂತರು, ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು, ಎಷ್ಟೋ ಉನ್ನತವಂತ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ದೇವರು ಈ ಬಾಧ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. God has not called noble people, rich people, educated people, high class people to do his work. Whom has God called? ದೇವರು ಎಂತನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ತುಣಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ಬಿದ್ದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದವರಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. परमेश्वर ऐसे लोगों को बुलाता है जो इस संसार बहुत ही नीचे की दृष्टि में देखता है. जो संसार बोलता है तुम किसी काम के नहीं हो, संसार बोलता है तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, अच्छा ही नहीं है, बड़प्पन नहीं है, तुम किसी काम के नहीं हो, ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है अपने काम के लिए. क्योंकि ताकि कोई भी आदमी अपना बड़ाई न करे, इसीलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है. अगर परमेश्वर धनवान व्यक्ति को चुनेगा तो वो क्या बोलेगा? मेरे पास पैसा है इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना है. एक ज्ञानवान को परमेश्वर चुनता है तो मेरे पास बहुत ज्ञान है इसलिए मैं परमेश्वर काम के लिए उपयोग आ सकता हूँ, परमेश्वर मुझको चुना है. ऐसा ना बोले, इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को ठुकराता है. और किन लोगों को वो चुनता है? जो जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, जो बहुत ही निर्बल होते हैं, जिनमें शक्ति नहीं है, जो बार बार इस प्रकार गिरते जाते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत परमेश्वर को है. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥವರು, ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂಥವರು, ಓದಿಲ್ಲದಂಥವರು, ಹಣವಿಲ್ಲದಂಥವರು, ಬಡವರು, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾರದಂಥವ್ರು ಕರ್ತನು ನೀವು ನನಗೆ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಬೆಸ್ತರನ್ನು ಕರ್ತನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವಂಥವ್ರನ್ನು. ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಸಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗಿ, ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಆತನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. परमेश्वर मछली पकड़ने वाले लोगों को बुलाता है. देखिए, कोई इसका विश्वास कर सकता है क्या? इस जगत में हम संसार में देखते हैं, अगर कोई बड़ा काम हमें करना है तो कैसे लोगों को हम चुनते हैं? जो उसको करने के लायक होता है, जो बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत शक्तिमान होता है, जो बहुत ही टैलेंटेड होता है ना, बहुत ही टैलेंट होता है उसके अंदर, ऐसे लोगों को ही वो ऐसा काम सौंपते हैं. पर परमेश्वर ने अपना काम हमारे जैसे साधारण लोगों को वो दे दिया है. देखिए, मुझे बात करना ठीक से नहीं आता, मैं ठीक से आपको समझा भी नहीं सकता हूं, पर ऐसे लोगों को परमेश्वर अपना काम करने का वो जिम्मेदारी देता है. ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಈ ಕರ್ತನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅಂದರೂ ಸಹ ಕರ್ತನು ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವು ಈ ಕರ್ತನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವ ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸಹ ಕೀಳುಮಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಯೋಹನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿತೇವೆ. ಯೋಹನ के बारे में और आगे हम पढ़ते हैं. देखिए, ಯೋಹನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಓದುವಾಗ यह यूहन्ना ऊंट के रोम, 4 वचन 4 वचन, यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े की कटिबंध बांधे हुए था. उसका भोजन टिड्डिया और वन मधु था. देखिए, हम किधर देखते हैं, उसका खाना क्या था? वो बहुत ही साधारण खाना वो खाने वाला व्यक्ति था.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯೋಹಾನನಾಗಿದ್ದನು ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾನು ಜೀವಳ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾರು ಬೇಕು, ನಾನು ಕರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂಥವ್ರು ಬೇಕು, ಕರ್ತನ ಸೇವೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಏನಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬೇಕು, ನನಗೊಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೇಕು, ಆಗಲೇ ನಾನು ಕರ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನಂಥವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯ. इस संसार में देखते हैं, अगर मुझे परमेश्वर का काम करना है तो मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए. अगर आप ये सब मुझे दे सकते हो तो मैं परमेश्वर का काम करने के लिए तैयार हूं. पर यूहन्ना के पास क्या था? देखिए, उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है, चमड़े के वस्त्र वो पहन रहा है, अच्छा खाना उसके पास नहीं है, जो टिड्डियां वो खा रहा है, वन मधु वो खा रहा है, अच्छा खाना देने वाला व्यक्ति उसके पास नहीं है. ऊंट के वस्त्र, चमड़ी के वस्त्र पहना है. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಒಂಟೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಆತನು, ಚರ್ಮದ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಆತನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಮಿಡತೆಗಳನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಆತನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಕೊಡುವಂಥವ್ರಿಲ್ಲ, ಆತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಲ್ಲ. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಹಾನನ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇದೇನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ರೋಷದಿಂದ, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಯೋಹಾನನ ಕರ್ತನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆತನಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಲಿಬಹುದು. बहुत सारे चीजें उसके द्वारा हम सीख सकते हैं. कुछ भी नहीं है उसके पास, अच्छा खाना, अच्छा वस्त्र, उसके पास घर नहीं है, उसके काम के बारे में बड़ाई करने वाला व्यक्ति कोई नहीं है, पर वो परमेश्वर के काम में बहुत ही, प्रभु के दास बोल रहे थे ना, लवलीन होकर वो कर रहा है. ನಿಮಗ್ನರಾಗಿ ಕರ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಕರ್ತನ ಸೇವಕನು ನಿಜವಾದ್ರು ಯಾರಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಆಶಿಸದೆ, ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಶಿಸದೆ, ಕರ್ತನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಾತನೇ ಕರ್ತನ ದಾಸನು, ಕರ್ತನ ಸೇವಕನು, ಕರ್ತನ ಪರಿಚಾರಕನು ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಣ ಸಿಗತ್ತೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದೇನೋ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ if you are doing the work of God for money, for fame, for status, for reputation and goodwill. अगर हम बड़ाई के लिए, पैसा के लिए, हर एक चीज के लिए, संसार की चीजों के लिए परमेश्वर का काम अगर हम करते हैं तो हमारे समान जो है दुर्दृष्टवान जो व्यक्ति होता है ना इस संसार में, और दूसरा कोई भी नहीं, हम हो जाएंगे. क्योंकि इतना बड़ा काम हम कर रहे हैं इस संसार में परमेश्वर का, अगर स्वर्ग राज में जाने के बाद हमारी स्थिति सबसे नीचे हो जाएगी. देखिए, एक बार इसके बारे में हम सोचना चाहिए, ಇದ್ರ ಕುರಿತು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ದೇವರು ನಮಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಆತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನ ಕೇಳುವಾಗ, ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಈ संसार को छोड़ने के बाद, स्वर्ग राज में जाने के बाद परमेश्वर पूछेगा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, तू मेरे लिए क्या किया है? तब हम बोलेंगे, परमेश्वर पिता, प्रभु जी, मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत सारी छिंगाई का काम किया है, बहुत सारे लोगों की सहायता की है, बहुत बड़ा तुम्हारा काम किया, कलीसिया में मैंने इस प्रकार मेरे समान खड़े होकर सब लोगों को सुसमाचार बांटा है. तब परमेश्वर क्या बोलेगा? मैं तुमको नहीं जानता. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕರ್ತನ ಸೇವೆನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ದೆವ್ವಗಳು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಉನ್ನತವಾಗಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಪರಲೋಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಯು ಆರ್, ಐ डोंट नो योर आइडेंटिटी, तुम्हारी पहचान मुझे नहीं है, बोलेगा परमेश्वर. क्यों ऐसा बोला? मैंने तो परमेश्वर का काम किया, परमेश्वर की उसकी सेवकाई की है, उसके कलीसिया में मैंने उसका काम किया है. पर किसके लिए किया है? मैंने मेरे नाम के लिए किया है क्या? मेरी महिमा के लिए किया है क्या? या परमेश्वर के लिए किया है? मैंने आशीष पाने के लिए परमेश्वर का काम किया है क्या? आशीष भला ही हमें मिल सकता है इस संसार में, पर परलोक राज्य में, स्वर्ग राज्य में हम क्या हो जाएंगे? परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही छोटे लोग बन जाएंगे, बहुत ही छोटे लोग. अगर हमें बड़े लोग बनना है परमेश्वर की दृष्टि में, तो हमें बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के समान साधारण जीवन व्यतीत करना है. साधारण, हम भले हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो कंगालों की सहायता करो, आप गरीबों की सहायता करो. जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको तुम आदर दो, उनकी सहायता के लिए तुम आगे अपना हाथ आगे बढ़ाओ. परमेश्वर के राज में आपको प्रतिफल मिलेगा.
उतना नहीं बल्कि आप अपने जीवन में इस प्रकार बहुत ही लग्जूरियस, जो बोलते हैं ना, बड़े बड़े लोग जो इस संसार में जीते हैं उनके बारे में दिखाने के लिए अगर ऐसा जीवन आप व्यतीत करोगे तो परलोक स्वर्गराज में बहुत छोटे लोग बन जाए। भले ही आपके पीछे 1000 लोग, लाख लोग आप इस संसार में आपका पीछा करते हो, फॉलोअर्स बोलते हैं ना, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और कहाँ में होते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे फॉलोअर्स हमें मिलते रहते हैं, पर परलोक स्वर्गराज में एक भी आदमी हमारे पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि अपनी महिमा के लिए, अपने स्थान मान के लिए अपने परमेश्वर का काम किया। यू दैट डू इनिक्विटी గెట్ అవే ఫ్రమ్ మీ, అతిక్రమం చేయ వాళ్ళ ఎదురు నుంచి మీరు తొలగిపోండి. క్రమాన్ని దాటి ఏదైతే మనం చేస్తామో అది అతిక్రమం. దేవుడు చెప్పిన దానికంటే ఎక్కువ ఏదైతే మనం చేస్తామో అది అతిక్రమం. దేవుడు చెప్పిన దాన్ని వదిలిపెట్టి ఏదైతే మన సొంత ఇష్టంగా దాన్ని చేస్తామో అది అతిక్రమం. అతిక్రమం చేయవాళ్ళ వారికి దేవుని సన్నిధిలో పరలోక రాజ్యంలో స్థానం లేదండి. అది నేనైనా మీరైనా ఎవరైనా క్రమము దాటిపోయే వారికి దేవుడు పరలోకంలో స్థానం ఇవ్వడు. ఆ క్రమం ఏమిటి అనేది దేవుడు వాక్యంలో దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మనకి బయలుపరుస్తాడు. మన స్థానం ఏంటి, దేవుడు మనకిచ్చిన తలాంత్ ఏంటి, దేవుడు మనకిచ్చిన పని ఏంటి, దాన్ని మనం ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తున్నాం, అది దైవికమైన క్రమంలో దేవుని చిత్తానుసారంగా ఒకవేళ మనం చేసినట్లయితే మాత్రమే పరలోకంలో దానికి మనం ప్రతిఫలం పొందుకుంటాం. అంతవరకే కానీ నా కొరకు ఏదైతే నేను సంపాదించుకుంటున్నానో పేరు ప్రఖ్యాతులు, అదేది కూడా నన్ను దేవుని యొక్క దృష్టిలో గొప్పవాణిగా చేయలేదు, ನನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ. ಜೋ ಕುछ भी मैंने अपने आप के लिए ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ಅದು ಕೇವಲ ನನಗೋಸ್ಕರನೇ ಉಳಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. बपतिस्मा యోహాన్ ಸಾಧಾರಣ ಜೀವನ ವ್ಯತೀತ करने वाला, वो अपने आप को नहीं दिखा रहा है. ಈ ದಿನಗಳು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದೇ. ನಾನು ಯಾರು, ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ನನ್ನ ಅಂತಸ್ತು ನಾನು ಇತರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಶೋ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಅವರ್ ಮನಿ, ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಅವರ್ ನೇಮ್, ಫೇಮ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ದ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್. ಯೋನು ಸ್ನಾನಿಕಂತ ಯೋನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆತನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ದೋ ವಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಬಲಹೀನರಾಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮಿಡತೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಂಥ ಜೇನುತುಪ್ಪದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಂದರೆ ಕರ್ತನ ಆತ್ಮ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಪ್ರಿಯರೇ. पवित्र आत्मा से भरपूर होने के बाद ही बपतिस्मा का यूहन्ना में ऐसी शक्ति आई कि वो साधारण जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति, साधारण भोजन खाने वाला व्यक्ति इतनी बलवान रीति से परमेश्वर के वचन बोलता है, इतना धैर्यवान. वो क्या बोलता है देखिए, ಕೆಳಗಿನ ವಚನ ನೋಡ್ತೇವೆ. 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, 7वें वचनದಲ್ಲಿ, जब उसने बहुत सी फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो. देखिए किस प्रकार वो डांट रहा है. किनको डांट रहा है? सदुकियों को, फरीसियों को. ये कौन है सदुकी फरीसी, आपको मालूम है क्या? ये परमेश्वर के घर में सबसे ऊंचे स्थान में रहता है. ये फरीसी सदुकी वो क्या करते हैं मालूम है? वो गरीबों को टुकराते हैं, परमेश्वर के वचन को वो हेर फेर कर देते हैं, और जो अपना जो बातें बोलते हैं वो बातें परमेश्वर के वचन बोलकर वो सब लोगों को बोलते हैं. उनको परमेश्वर का जो नियम है ना, धर्मशास्त्र, सब कुछ मालूम है उनको, पर उसका पालन करने में वे कभी भी आगे नहीं आते. वही है फरीसी और सदुकी. ऐसे लोग बहुत है इस संसार में. परमेश्वर के घर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं. ಫರಿಸಿಯರ ಸದ್ದಿಕರನ್ನು ಯಾಕೆ ಆತನು ಇಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಆತನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ? ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅದು ಕಂಠಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ, ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನವಂತರಾದಂಥ ಫರಿಸಿಯರು, ಸದ್ದಿಕಿಯರು, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು ಇವರು ಕರ್ತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು, ಇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸಹ ಬಡವರನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸುವಂಥವ್ರು, ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಳ್ಳಗಳೆಯುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರು ಫರಿಸಿಯರು, ಸದ್ದುಕಿಯರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಸಹ ಯಾರಂದರೆ ಸರ್ಪ ಸಂತಾನವೇ. हम सभी अगर ऐसा जीवन फरीसियों का, सदियों का जीवन हम जीते हैं तो हम कोई नहीं परमेश्वर के संतान नहीं, बल्कि हम सब लोग भी सांप के संतान है, सर्प के संतान. सर्प क्या है? वो जहर से भरा रहता है पूरा उसका शरीर.
हम भी जहर से भरे होते हैं अगर ऐसे लोग हम बन जाएंगे तो. ವಿಷದಿಂದ ತುಂಬಿದಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಪದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ಫರಿಸಿಯರ ಸದ್ದುಕಿರ ಜೀವಿತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ. ಸುಣ್ಣ ಹೊಡೆದಂಥ ಸಮಾಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇಷಧಾರಿಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅವರು ಹೊರತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿವಂತರಾಗಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿ, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕರ್ತನನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ತು ಹೋದಂಥ ಆ ಒಂದು ಎಲುಬುಗಳು ದುರ್ವಾಸನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಹೊಡಿತೋ ಅಂಥ ಜೀವಿತ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. देखिए एक समाधि जो है, समाधि के बारे में उनका ऐसे बोलता है परमेश्वर, तुम तो एक समाधि का जीवन तुम्हारा जीवन है. क्यों? समाधि के अंदर जो है सब कुछ जो सड़ चुका है, दुर्गंध से भरा है, पर बाहर क्या है, सब लोग हर साल क्या करते हैं, उसके सामने कैंडल जलाते हैं, उसको फूल चढ़ाते हैं समाधि में, और उसको क्या बोलते हैं, वाइट वॉश करते हैं ना, पेंट करते हैं. सबको क्या दिखता है बाहर से, वो कितना अच्छा समाधि है, पर उसके अंदर क्या है, सड़े हुए मांस और दुर्गंध हमें मिलता है. ऐसा जीवन था फरिसियों का और सद्दुकियों का. ಕೊಳ್ತು ಹೋದಂಥ ಸಮಾಧಿಯ ಜೀವಿತವು ಫರಿಸಿಯರದು ಸದ್ದುಕಿಯರ ಪ್ರೇರಣೆ. ಈ ಜೀವಿತ ನಮ್ಮದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫರಿಸಿಯರ ಹಾಗೆ ಸದ್ದುಕಿಯರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಾಳ್ಬಾರ್ದು. ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿತ್ತಂತಂದರೆ, ಅವರು ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಒಂದು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾಮಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಕರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಎರಡು, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಇದ್ದಾಗ ಅದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇದ್ದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ತಾರುಮಾರು ಮಾಡುವಂಥವ್ರು. ಈ ಮೂರು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫರಿಸಿಯರ ಸದ್ದುಕಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ये 3 लक्षण में उनके अंदर दिखता है. क्या मिलता है? केवल नामकारी जीवन. मैं एक मसीही परिवार में पैदा हूँ तो मैं स्वर्ग चला जाऊँगा, ऐसे बोलते हैं वो. बहुत सारे लोग ऐसे भ्रम में जी रहे हैं. मैं तो एक क्रिश्चियन हूँ ना, मैं एक मसीही हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है, चर्च जाता हूँ, सभी उसकी आराधना करता हूँ, मैं स्वर्ग चले जाऊँगा. ऐसे भ्रम में बहुत लोग जी रहे हैं. ऐसे भ्रम में फरीसी सद्दुकी भी जी रहे थे. पर बपतिस्मा यूहन्ना क्या बोला उसको, क्या बोल रहे हैं उनको, तुम तो सर्प के संतान हो, क्योंकि तुम जहर से भरे हो. परमेश्वर के वचन को तुम टुकराते हुए तुम बोलते हो कि मेरा जैसा आत्मिक व्यक्ति, मेरा जैसा भक्तिवान और कोई नहीं है. ನನ್ನಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಪರರು, ನನ್ನಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯರು ಮತ್ತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದರೆ, ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಳ್ಳಗಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಟಿಗಳಿಂದ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ದೂರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. तुम अपने होठों से मेरी स्तुति आराधना करते हो, तुम्हारा मन मुझसे बहुत ही दूर है. इनका जीवन उसी प्रकार का था. ये 3 लक्षण हमारे अंदर से हमें निकाल लेना है. क्या है? नामकारी जीवन, चुपके परमेश्वर के घर को आना, उसकी आराधना करना, चले जाना. ಕರ್ತನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಇದು ನಮಗೆ ಕರ್ತನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜೀವಿತ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. दूसरी बात हम देखते हैं, ವೇಷಧಾರಿಗಳ ಜೀವಿತ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ವೇಷಧಾರಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಟ್ಟವರು. ಹೊರಗಡೆ ಭಕ್ತಿವಂತರು, ಒಳಗಡೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಹೀನರು. ಹೊರಗಡೆ ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಒಳಗಡೆ ಕೊಳ್ತು ಹೋದಂಥ ಪಾಪಾತ್ಮರು. ಈ ಜೀವಿತ ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. बाहर से बहुत अच्छा ही से हम देखते, बहुत ही सुंदर है ये, बहुत ही अच्छी दिख रही है, अच्छा दिख रहा है, पर अंदर क्या है? पाप का जीवन भरा है, पापी है हम. ये संसार में वो कैसे देखती है? बाहर, सिर्फ बाहर की चीज़ें वो देखती है. परमेश्वर जो है हमारा अंतराल जो है उसको देखता है, हमारे मन को देखता है. इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि में हमें अपने जो मन है, अपना जो हृदय है, उसको हमेशा पवित्र बनाए रखना है. ऐसे लोगों को ही परमेश्वर अपने काम के लिए उपयोग करेगा. जो कोई काम ऐसे लोग करते हैं ना, वही काम स्वर्ग राज में वो टिकेगा. ಅಂತ ಪವಿತ್ರವುಳ್ಳ ಹೃದಯವರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಾರನೇ ಕರ್ತನಾತನ ಕೂರಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ. It should stand, our ministry, our work, our love, our labor for the Lord should stand in eternity. Not that it should be burnt, not that it should be a temporary thing. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇರಬಾರ್ದು ಪ್ರಿಯರೇ ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎಟರ್ನಿಟಿ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಬದುಕ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರು, ನೀವ್ಯಾರು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಗಳ, ಮತ್ಸರ, ದ್ವೇಷ, ಕೋಪ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಒಂದಿನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕನಾಗಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದು ನನಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ನರಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ₹1 ನನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಂದರೆ, ಕರ್ತನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಸಾಧನವಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತೇವೆ.
जो घृणा, जो द्वेष हमारे अंदर हम पैदा करते हैं, क्या फायदा है हमारे अंदर? एक दिन आप मर जाएंगे, एक दिन मैं मर जाऊंगा, इस संसार को छोड़कर हमें चले जाना है। कोई भी इधर बहुत साल तक नहीं टिकेगा, सबको इस संसार को छोड़कर चलना है। धनवान व्यक्ति भी मरेगा, कंगाल भी मर जाएगा, सबको एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होना है। तब हम क्या बोलेंगे? परमेश्वर पूछेगा, क्यों उस व्यक्ति से तुम घृणा करते थे, क्यों द्वेष कर रहे थे? तुम तो मेरी सेवा करते हो ना, तुम तो मेरे घर में मेरी आराधना करते हो ना, क्यों ऐसी बुद्धि तुम्हारे अंदर आई थी? ನನ್ನ ಸೇವೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ನೀನು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ನೀನು ವ್ಯತೀತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ಮಗಳು ಎನ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಆದಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. मुझे शर्म आती है तुम्हें मेरी बच्ची मेरा बच्चा बुलाने के लिए. परमेश्वर बोलेगा एक दिन. अगर ऐसा ही जीवन हम व्यतीत करते रहेंगे तो, ಇದೇ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊನೆಸಾಗೋದಾದರೆ ಒಂದಿನ ನಾವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಸಾಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. वी शुड करेक्ट आवरसेल्स, वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्स फॉर एटर्निटी. हमें अपने आप को ठीक करना है, क्योंकि हम कब मर जाएंगे हमको नहीं मालूम है. मरने से पहले हमारे जीवन को ठीक करना है, हमारे जीवन को हमें संभालना है. किसके लिए? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ जीने के लिए हम जाना है. मुझे जाना है, आपको भी जाना है. वी आर ऑल ट्रैवलर्स, वी आर ऑल सोजोर्नर्स इन दिस वर्ल्ड. हम सब यात्री हैं इस लोक में. कुछ साल के बाद मैं मर जा दूंगा, कुछ साल के बाद आप भी मर जाएंगे, हमारी यात्रा खत्म हो जाएगी. फिर हमें कहाँ जाना है? स्वर्ग राज में जाना है. परमेश्वर के सामने रुकना है, युगानुयुग उनकी आराधना करते हो, अनंत काल का जीवन के साथ हमें बिताना है. ಈ ಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡವರಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಕರ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಆತನ ಮುಖದರ್ಶನ ನೋಡುತ್ತಾ ಆ ಧನ್ಯಕರವಾದಂಥ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವೇ, ವಿ ಆರ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ವೇ. सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ? हमारी आत्मिक स्थिति क्या है अभी? क्या हम वहाँ जाने के लिए तैयार है क्या? साधारण जीवन हमारा है क्या, ये संसार की चीज़ों में हम जकड़े हुए? ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಿತ ನಾವು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಲೋಕ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುತ್ತು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಗಾಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ತಿ ಲೈಫ್. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಂಥ ವ್ಯರ್ಥವಂತ ಜೀವಿತ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದು ಕರ್ತನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ऐसी बुरी जिंदगी से तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि वो तुम्हें नरक को लेके जाएगी. नरक में या तो उस आग के झील में तुम जल जाओगे. जलने के लिए मैंने तुम्हें उद्धार नहीं दिया है, परमेश्वर बोलता है. सुट्टू ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕರ್ತನು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಬೇರೆ. तुम जी सको, मेरे साथ जी सको, समृद्धि भरपूरी का जीवन जी सको. యోనా का समाचार 10वें अध्याय में देखते हैं. నేను ఎందుకు వచ్చిన అంటే మీకు జీవం కలుగుటను, అది సమృద్ధిగా కలుగుటకును నేను వచ్చితిని. దట్స్ అబండెంట్ లైఫ్ బిగిన్స్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ అండ్ ఇట్ ఎండ్స్ ఇన్ ఎటర్నిటీ. ఆ సమృద్ధి గల జీవితము క్రీస్తునందు ఈ లోకంలో ఆరంభించబడుతుంది, నిత్యత్వములో అది ముగించబడుతుంది. నిత్యత్వం ఏ విధంగా అది ముగింపు లేదో ఆ సమృద్ధి గల జీవితాన్ని కూడా ముగింపు లేదండి. దట్ ఈస్ ద అబండెంట్ లైఫ్, దట్ ఈస్ ద బ్లెస్డ్ లైఫ్ గాడ్ ఈజ్ ఆఫరింగ్ టు ఈచ్ అండ్ एवरी वन ऑफ अस. ऐसा धन्यपूर्ण जीवन पढ़िए वो 10वें अध्याय में देखते हैं. नीचे वचन में 10वां वचन, यूना का सुसमाचार 10वां अध्याय में चोर किस लिए आता है? हाँ, वो वचन पढ़िए. ठीक है. बहुतायत का जीवन देना ही परमेश्वर का उद्देश्य है. बहुतायत का जीवन हमें कभी मिलता है? जब हमने उद्धार पा लिया, बहुतायत का जीवन हमारे अंदर आरंभ हो जाता है. बहुतायत का मतलब क्या है? मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, मुझे बड़ा काम मिल जाएगा, कार बंगला मिल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है. परमेश्वर क्या बोलता है उसको हमें ठीक तरह से समझना है प्रियो. अगर सभी लोग धनवान लोग स्वर्ग जाएंगे, पैसे वाले ही स्वर्ग जाएंगे, जो इस प्रकार अपने बैंक बैलेंस रहता है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां रखता है ना, वही अगर स्वर्ग जाएंगे तो गरीब लोग किधर जाएंगे? आप इसका उत्तर दीजिए मुझे. परमेश्वर किसके लिए आया? परमेश्वर हमसे कैसा जीवन हमें वो पूछता है.
ಕರ್ತನು ನಮ್ಮಿಂದ ಎಂಥ ಜೀವಿತವೂ ನೀವು ಕಳಿಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಿಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಧನಿಕರಾಗುವುದಾದರೆ ಧನಿಕರ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ, ಈ ದಿನ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೂಜಿಯ ಮೂಗಿನಿಂದ ಒಂಟೆಯೂ ಹೋಗ್ಬೋದಂತೆ. ಒಂದು ಸೂಜಿ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಸೂಜಿಯ ಮೂಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಒಂಟೆಯೂ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಿಗೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಸೇರೋದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತೆ. ಸೂಜಿಯ ಒಂದು ಮೂಗಿನಿಂದ ಒಂಟೆ ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟೋ ಸುಲಭ ಅಂತೆ, ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನಿಕನ ಸೇರೋದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಿಂಗ್ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್, ಕೈಂಡ್ಲಿ ಐ ಅಪೋಲೋಜೈಸ್. ನಾನು ಧನಿಕರನ್ನು ಯಾವ ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಬೈಯೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಐಶ್ವರ್ಯವು ದೇವರು ಕೊಡುವಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯವು ನಾವು ದೇವರಾಗಿ ನಾವು ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದೆ, ಅದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಬದಲಾಗದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೇವರು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಅದು ತುಂಬಿ ಹೊರಸೆ ಸುರಿಸುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. 23ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, जब परमेश्वर हमें पैसा देता है, परमेश्वर हमें अच्छा बड़प्पन देता है, किस लिए देता है? ताकि हम दूसरों को उसके आशीष में हम ला सके. तो हम अपने आप के लिए स्वार्थी बनकर ना जिए, इसलिए वो नहीं देता है. देखिए आशीर्वाद ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರೋದಾದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, దట్ విల్ గెట్ స్పాయిల్డ్. అది చెడిపోతుంది. ఆశీర్వాదం అనేది ఒకే చోట ఉంటే ఏమవుతుందంటే అది దుర్వాసన వస్తుంది, అది ఎవరికి ప్రయోజనం ఉండదు. కొద్ది దినముల తర్వాత అది మనకే శాపంగా మారిపోతుంది. ఆశీర్వాదం అనేది అది మన నుంచి ఇతరులకి వెళ్ళేదిగా ఉండాలి. వి షుడ్ బి గివర్స్, గివ్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇనఫ్, గాడ్ విల్ సే. ఎంతవరకు మనం ఇవ్వాలంటే ఇంకా చాలు అనేంతవరకు, దేవుడు చాలు అనేంతవరకు మనం ఇవ్వాలి. అది డబ్బనే కాదు కానీ మన శక్తి, మన జ్ఞానం, మన ప్రయాస, సమస్త మన హృదయం యొక్క సేవ, మన యొక్క సమర్పణ. దేవుని యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారము అరణ్యంలో కట్టుబడేటప్పుడు మోషే దేవుడు ఇశ్రాయేల్ ప్రజల మధ్యలో వారి యొద్ద నుంచి నీవు తీసుకోవాలని దేవుడు చెప్పినాడు. ఇష్టపూర్వకం ఎవరైతే ఇస్తారో వారితో తీసుకొని ఆ వెండి బంగారముల చేత ప్రత్యక్ష గుడారం నీవు కట్టాలి. परमेश्वर बोलता है मूसा को उस अरण्य में, मेरे इस घर को बनाने के लिए तुम इजराइलियों के बीच में से तुम इस प्रकार जो कुछ भी दे सके, सोना चांदी आभरण जो भी कुछ भी दे सके, उसको तुम इकट्ठा करो, मेरा घर तुम बनाओ. जब मूसा ने इन बातों को बोल दिया तब क्या करने लगे सब लोग? उनके उसमें उनकी कितनी समृद्धि थी उससे भी ज्यादा वो देने लगे. वो क्या थे? वो बूढ़ा व्यक्ति है, वो बूढ़ी व्यक्ति थी, वो अपने वो गरीब व्यक्ति था, फिर भी वो जो कुछ भी उसको बहुत ही హృదయపూర్వక से वो देने लगी परमेश्वर को. దేవుడు మనల్ని ఎంత ఇస్తున్నామని ఎప్పుడు అడుగుడు కానీ ఎలాంటి హృదయం, ఎలాంటి ఉద్దేశంతో ఇస్తున్నది ప్రభు యొక్క ఉద్దేశం అండి. వీ కెన్ గివ్ 10 crores, వీ కెన్ గివ్ 10 rupees. బోత్ ఆర్ సేమ్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ గాడ్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ అవర్ హార్ట్ ఈజ్ రైట్ విత్ ద గాడ్. మన హృదయం దేవునితో పాటు దేవుని యొక్క దృష్టిలో సరిగా ఉండి మనం 10 కోట్లు ఇస్తే దేవుడు దాన్ని ఎంతో ఉన్నతంగా చూస్తాడు. దేవుని యొక్క దృష్టిలో మన జీవితమే సరిగా లేకపోతే, హృదయం సరిలేకపోతే మనం 10 కోట్లు 1000 కోట్లు ఇచ్చినా కానీ అది 10 రూపాయలు కూడా సమానం కాదు దేవుని యొక్క దృష్టిలో. అవర్ గాడ్ ఈజ్ ద రిచెస్ట్ పర్సన్, హీ ఓన్స్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్, ఎంటైర్ యూనివర్స్, హెవెన్ అండ్ ఎర్త్ బిలాంగ్స్ టు హిమ్. వాట్ కెన్ వి గివ్ టు హిమ్ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್? ಈ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವು ಸರ್ವ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಕರ್ತನದು ಪ್ರಿಯ. ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನಿಗೆ? ಆತನಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ, ನಾನು ಕೊಡುವಂಥ ಹಣದಿಂದ ದೇವರು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. क्या मेरे पैसों से, मेरी कमाई से परमेश्वर जी रहा है क्या? ये संसार परमेश्वर का है, हम परमेश्वर के हैं. जो कुछ भी हम इस प्रकार सुख का जीवन हम बिता रहे हैं ना इस संसार में, उनका दिया हुआ है वो पूरा. अगर परमेश्वर एक बार वो छीन लेगा तो हम क्या बन जाएंगे? मिट्टी में मिल जाएंगे हम सब लोग. ಕರ್ತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನನ್ನಿಂದ ಕರ್ತನು ಬಾಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ತನಿಂದ ನಾವು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾದಿಗೆ ಆತನ ಮೂಲ. ನನ್ನ ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತ, ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬದುಕ್ತೇನೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ, ನಿನಗೆ ಆಯು, ನಿನಗೆ ಜೀವಿತ ಕಾಲಾವಧಿ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಟು लिव. परमेश्वर ये जीवन हमें जीने के लिए दिया है. हम किसके लिए जीते हैं वो निर्णय हमें लेना है.
परमेश्वर द्वारा दिया हुआ जीवन उनके लिए जीते हैं या मेरे लिए, मेरे स्वार्थ के लिए, मेरे अपने के लिए मैं जीऊंगा? ನನಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸ್ತೇನಾ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಜೀವಿತವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯ. ಸಾಧಾರಣವಂತ ಜೀವಿತವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದೆಂಬುದಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನಿಕಂತ ಯೋಹಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕೆಳಗಿನ ವಚನ ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನೇ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಸ್ನಾನಿಕಂತ ಯೋಹಾನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಹೊರತು ನಾನು ನಿನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನದ ಮಾತು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಮಸ್ತ ನೀತಿಯು ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ. ಯೋಹಾನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನ ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ಒಂದು ವಾರನ್ನು ನಾನು ಬಿಚ್ಚೋಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನ್ನಿಲ್ಲ. मैं तुम्हारे पाँव की जूती है ना, उसको खोलने की योग्यता भी मेरे अंदर नहीं है. ये बातें कौन बोल रहा है? इतना बड़ा आदमी बोल रहा है, इतना बड़ा भविष्यद्वक्ता है योना. पर यीशु मसीह उसके सामने आते ही आगे वचन में देखते हैं, वो आते ही क्या बोलता है, हे परमेश्वर, मैं तुम्हें बपतिस्मा देने की योग्यता मुझ में नहीं है, तू तो प्रभु है, हम सबका प्रभु है. पर यीशु मसीह ने बोला, अब के लिए इस धार्मिकता पूरा करने के लिए ऐसे ही होने दीजिए, बाद में हम इसको देखेंगे. कितना अपने आप को कम समझ रहा है योना. थोड़ा पैसा आ जाने से, थोड़ा अच्छा नाम कमाने से हम कितना अपने आप के बारे में सोचने लगते हैं. देखिए, परमेश्वर का दास है योना, कितना अपने आप के बारे में वो कम समझता है. एक परमेश्वर के दास में, परमेश्वर के बच्चों में रहने वाला, होने वाला एक अच्छी लक्षण है. इसे हमें सीखना है. पहले हम क्या देखते आए? फरीसियों की 3 बातों के बारे में. उसके पहले हम क्या देखते आए? परमेश्वर के बारे में पवित्र आत्मा से भरकर वो बातें कर. पवित्र आत्मा से हम सब लोग अभी भरे हुए हैं. जो कोई उद्धार पाया, जो कोई यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उनके समान हमें परमेश्वर की सेवा करना है. दूसरी बात हम देखते आए, ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದೇವೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಭರಿತನಾಗಿ ಯೋಹನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದನೋ ಆ ಸೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ. ಗಾಡ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಕರ್ತನು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಲ್ಲ. ಯೋಹಾನನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯ. ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 3ನೇ ಸಂಗತಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. 7ನೇ ಸಂಗತಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಫರಿಸೇಯರಾಗಿ, ಸದ್ದುಕೇಯರಾಗಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಾಗಿ ನಾಮಕಾರ್ಥವಂಥ ಜೀವಿತವು, ವೇಷಧಾರಣೆಯೊಂದು ಜೀವಿತವು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಾರುಮಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಜೀವಿತ ನೀವು ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು. ಈ 3 ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಹೊಂದಬಾರ್ದು. ಹೊಸ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಮಾತುಗಳು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಜಗಳಗಳು, ಭೇದಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಯಾಕೆ ಕರ್ತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ, ಕರ್ತನ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದಂಥ ಅನುಭವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಜಗಳಗಳು, ಭೇದಾಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. परमेश्वर के वचन में जो अनुभव ज्ञान रहता है ना, उसको हमने नहीं पाया. इसी कारण से परमेश्वर की कलीसिया में झगड़े हो रहे हैं, भेदाभिप्राय आते हैं, एक दूसरे को समझने में हम चूक रहे हैं. जब सत्य हमें हमारे अंदर बस जाती है तो वो तुम्हें छुड़ाएगी. यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री. ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೀರಾ, ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯೋನ್ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಯೋನ್ನಕ ಸುಸಮಾಚಾರ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ में देखते. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಈ ಜೀವಿತನ ಕರ್ತ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಾದಗಳ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಹುರಿದಕ್ಕೂ ಸಹ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, ಆತನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯ ಸ್ಥಾನವೂ ಸಹ ಯೋನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. जब यूहन्ना बोलता है कि हे परमेश्वर, तुम्हारे पाँव की जूती को इस पर उठाने की योग्यता मेरे अंदर नहीं है, तो वो क्या बोलता है? वो अपने आप को एक जूते के समान भी वो नहीं ले रहा है, उससे भी मैं छोटा हूँ. उन दिनों में देखते हैं कि जूता कौन लेके जाता है? जो वो रहता है ना, गुरु है, उसके शिष्य जो होते हैं, जो घर में सेवक जो होते हैं, वो चप्पलों को ले जाता है, इस प्रकार जूतियों को ले जाता है. ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮನೆಯ ಸೇವಕರು, ಗುಲಾಮರು, ಯಾರು ದಾಸರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಯಜಮಾನ ಬರೋವರು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯ. ಆದರೆ ಯೋಹಾನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕರ್ತನಿನ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಸ್ಥಾನವು ನನಗೆ ಬೇಡ ಕರ್ತನೆ, ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ಸಹ ನನಗಿಲ್ಲ. इस जूती के स्थान में भी मैं अपने आप को नहीं पहचान सकता, मैं तो उतना छोटा इंसान. ಅಷ್ಟು ಕೀಳುಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಹನ್ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಕರ್ತನೆ, ನಾನು ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. तुम्हें बढ़ना है, मुझे घटना है.
यूहन्ना बोल रहा है, यूहन्ना का सुसमाचार में देखते हैं. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾನು ಅನುದಿನವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡೋದು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಹೊಗಳುವಂಥದ್ದು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಉನ್ನತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕು. ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಬೇಕು, ಅನ್ಯರು ಸಹ ನೋಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡಬಾರ್ದು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತವ ಜೀವಿತವು ಏನಂತಂದರೆ ಇದೇ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೆಲಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಕರ್ತನು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಆಕಾಶ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತವರ ಜೀವಿತ. मैं भूमि मिट्टी के समान में नीचे हो जाऊं, मेरा परमेश्वर आकाश के समान सबसे ऊंचा हो जाए मेरे जीवन में. यही ये मसीह का जीवन है. इसे हमें हमारे जीवन में पालन करना है. देखिए, यीशु मसीह के बारे में एक बात सुनकर हम इसको खत्म कर लेंगे. यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए उधर यूहन्ना के पास आ रहा है. बपतिस्मा लेते ही क्या हो रहा है यीशु मसीह के सामने? ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? पारिवाल अंतंदे जो कबूतर है वो पवित्र आत्मा के बारे में बात करता है. पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह पानी के अंदर से बपतिस्मा होते बाहर आ गया, तब पवित्र आत्मा जो है कबूतर के समान उसके ऊपर आके बैठ गया. ನೋಡಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು ಪಾರಿವಾಳದಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೀರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪಾರಿವಾಳವು ಬಂದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಲೋಕವು ತೆರೆಯಲ್ಪಡ್ತ ಸ್ವರವಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಗೋ ನನ್ನ ಮಗನು, ಈತನಲ್ಲಿ ನಾನೆಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Behold my son, I am very well pleased with him. This is my beloved son. ತಂದೆ ಮಗನ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. God is in heaven, Son is in the earth, and the Holy Spirit is upon his shoulders. ನೋಡಿ, ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪ್ರಿಯರೇ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ದಿದು. ತಂದೆಯು ಮಗನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮಾನದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. पिता परमेश्वर उस आकाशवाणी से बातें कर रहा है. पुत्र यीशु मसीह उधर बपतिस्मा में वो इस प्रकार वो गवाही दे रहा है. उतना ही नहीं, पवित्र आत्मा भी उधर आके उसके बारे में गवाही देते हैं. तीन ट्रिनिटी, वी आर सीइंग द ट्रिनिटी हियर. पिता, पुत्र और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही स्थान में हम देखते हैं यीशु मसीह के अंदर. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದೆಯು ಮಗನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. अगर पिता परमेश्वर हमारे अंदर काम करना है तो पुत्र हमारे अंदर रहना है. पुत्र हमारे अंदर रहता है तो पवित्र आत्मा क्या बोलता है? तुम सच्चाई में जी रहे. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಸಬೇಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಿನಿಟಿ. ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತವರಲ್ಲ, ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬೇಕು. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡವನಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನು, ನನ್ನ ಮಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. लॉर्ड जीसस क्राइस्ट डिड दैट. यीशु क्रिस्तन आ रीति ಮಾಡಿದನು ಬೇರೆ. परमेश्वर यीशु मसीह ने पिता को, उनकी इच्छा को, उनके उद्देश्य को पूरा किया. उतना ही नहीं, पवित्र आत्मा उसके ऊपर बैठने के लिए उसने अवकाश दिया. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು ಬರಬೇಕು, ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಗಿವ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ గాడ్ దట్ హీ విల్ వర్క్ ఇన్ అస్. అందుకే అనేక సార్లు మనము దేవుని వాక్యంలో పౌలు రాసి చూస్తాం, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఆర్పకుడి, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మీరు చల్లార్చుకుడి, పరిశుద్ధాత్మని మీరు దుఃఖపరచుకుడి. ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ ఇన్వెలింగ్ అస్. హీ రిమైన్స్ సైలెంట్ వెన్ వి సిన్, హీ గోస్ అసైడ్ వెన్ వి సిన్, he remains silent when we revolt against God. पवित्र आत्मा हमारे अंदर ही रहता है. जब हम पाप करते हैं, जब परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, जब हम इस लोक में गिर जाते हैं, तो पवित्र आत्मा वो चुपचाप रुक जाता है हमारे अंदर, चुप रह जाता है हमारे अंदर, वो काम नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि हमने उनको अवकाश नहीं दिया, क्योंकि हमें पाप का अवकाश दिया है. जब पाप काम करता है तो हमारे अंदर, जब when sin starts working in us, the spirit of the Lord becomes silent. परिशुद्धात्मा దేవుడు कार्य చేయలేడు. पवित्र आत्मा इस प्रकार वो मौन रुक जाता है, क्योंकि तुमने मुझे अवकाश नहीं दिया. बपतिस्मा यूहन्ना उसको अवकाश दिया, इसलिए शक्तिवान परमेश्वर की सेवकाई वो करने लगा. अगर हम भी हमारे जीवन को परमेश्वर को देकर ऐसे कर सकते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहेगा, हमारे जीवन में रहकर बड़े बड़े काम हमारे द्वारा वो करेगा.
यीशु मसीह ने ऐसे ही किया। 4 दिन, चौथे अध्याय में मत्ती सुसमाचार में देखते हैं, यीशु मसीह का जीवन पवित्र आत्मा से भरपूर होकर 40 दिन उपवास करने के बाद वो बड़े बड़े काम करते गया। देखिए उसके बारे में देखते हैं मत्ती सुसमाचार 4th अध्याय, मत्तನ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ। वचन से देखिए, 4th अध्याय मत्ती सुसमाचार 23 वचन से, 4ನೇ अध्याय मत्तನ ಸುವಾರ್ತೆ 23ನೇ वचनದಿಂದ, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। देखिए यीशु मसीह इधर क्या कर रहा है, वो घूमते जा रहा है। गलील, दिकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया, यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे बोली। ಯೇಸು ಮಸೀದರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ ರಾ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಪನಿచేస్తున్నాడు, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ಯೋಹನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಬರ್ತನಾಗಿ 40 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್. ವೆನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇಂಡ್ವೆಲ್ಸ್ ಅಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ, ಟು ಅರ್ನ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್. ವೆನ್ ವಿಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಕಮ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾರ್ಡ್? ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಶಿಷ್ಯನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಬಾಧ್ಯತೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲಿ, ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾದದ್ದೆಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಂತ ಜೀವಿತದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಕರ್ತನು ತಂದೆಯನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟನು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರು ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು. यीशु मसीह के जीवन इस पवित्रता के कारण, परिशुद्धता के कारण क्या हो गया? पिता परमेश्वर उसके बारे में गवाही दे रहा है। उतना ही नहीं बल्कि पवित्र आत्मा उसके बारे में गवाही दे। अब आज हमारे बारे में कौन गवाही दे सकता है? कोई बोल सकता है क्या तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान आत्मिक रीति से रहने वाला कोई है क्या? बोलता है कि हमारे बारे में कोई? हमारे तो बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी जो क्या है गलत फहमियों के बीच में हम जीते हैं। पर यीशु मसीह कैसा जीवन उसने व्यतीत किया? ना कि वो परमेश्वर का पुत्र इसलिए वो ऐसे जी सका, ऐसा नहीं है। उसके अंदर पवित्र आत्मा आया, वो इस प्रकार पिता को अपने आप को समर्पित किया, इसी कारण वो इस प्रकार जी सका. ಆತನು ದೇವರ ಮಗ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಆತನು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಪ್ರಿಯರೇ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಭರಿತನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆತನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. ಈ ಸಮ್ಮತಿ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಂತಂದರೆ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್, ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಟೆಡ್, ಕಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟು ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಲ್ಪಟ್ಟದಾಗಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮತಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸಮ್ಮತಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ इन बातों को हम याद करके परमेश्वर की इस मेज में हम भाग लेंगे. फरीसियों की सदियों का जीवन हमारे अंदर से निकाल देना है. नामकारी जीवन, वेशदाड़ी का जीवन, परमेश्वर के वचन को हेर फेर करने का जीवन नहीं रहना है. उससे पहले हम क्या देखते हैं? पवित्र आत्मा को समर्पित करके परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को तैयार करके समर्पित करना है. यीशु मसीह के समान परमेश्वर पिता के द्वारा और पवित्र आत्मा द्वारा हमें सम्मति पानी है. वो कब में हमें मिलेगी? जब हम परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देंगे, तब परमेश्वर ही आके हमारे बारे में वो बोलने लगेगा. कोई आदमी नहीं बल्कि परमेश्वर ही हमारे बारे में बोलने लगेगा. ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರ ಸಾಕ್ಷಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಳೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಹೇಳಿದಂಥ ಅದೇ ಬಾಯಿ ನಾಳೆ ನೀನು ಕೆಟ್ಟವನು, ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದು ನಮ್ದು ಹೇಳ್ತೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾಡ್. ದೇವರು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇವರು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಂತ ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಆತನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. मैं कभी भी तुम्हारे पाप को याद नहीं रखूंगा, परमेश्वर बोलता है. ಮನುಷ್ಯನು ಇವತ್ತು ನೀನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ನೀನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಆತನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ.
अदे मनुष्य के देवरिगिरुवंत व्यत्यास। यही है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में अंतर। गलतियों मनुष्य तुम मरने तक उसको याद रखता है, पर परमेश्वर एक बार तुम्हें क्षमा दे दिया उसके बारे में कभी भी वो याद नहीं रखता। वही परमेश्वर की बड़ाई है, उनका ऊंचा उनका मन है। ಇಂಥ ಹೃದಯ ಇಂಥ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಿಯ, ಆಗಲೇ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತವ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರೈಸ್ತವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿ ಜೀವಿತನ ಹೊಂದಿ ಬಾಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. परमेश्वर अपने वचन पर आशीष रखे.